Hello everyone, welcome back to our new channel. Students, today we are going to talk about something that touches every human being on earth. Peace. Now, peace is not just the absence of war. It's a way of life. It's about how we treat each other, how we resolve conflicts and how we build a better society. तो इसको समझने के लिए we'll learn from two very powerful stories. Okay, first is Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence, and then we'll learn about Christmas truce of World War One, when enemy soldiers suddenly stopped fighting and they came together in humanity. Okay, तो पहले हम महात्मा गांधी जी के मैसेज के साथ शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी जी, जिनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, बट उनका जो मैसेज है, इट वेंट फार बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स. ही बिलीव्ड इन समथिंग कॉल्ड ahimsa. 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 Ahimsa matlab non-violence. Now here's a question. What do you think is stronger word? What do you think is stronger? A sword or an idea? Now, देखो, सिंपल सी बात है. अगर आप किसी से पूछोगे, so most people will say that weapons win wars. But Gandhi ji proved that idea, that truth, non-violence and compassion can shake even the strongest empires. ओके, अब देखो यहाँ पे एक उनका इंटरव्यू का क्वेश्चन मेंशन्ड है. जस्ट आवर्स बिफोर हिज असैसिनेशन इन 1948, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनसे क्या क्वेश्चन पूछा? हाउ वुड यू मीट द एटम बॉम्ब विद नॉन वायलेंस? हाउ वुड यू फेस एन एटम बॉम्ब विद नॉन वायलेंस? एंड गांधी जी गेव अ शॉकिंग आंसर. ही सेड, I will not hide in a shelter. I will stand in the open. I will let the pilots see that I bear no hatred in my heart. And even if I die, my sacrifice will not be in vain. Now imagine that. Instead of fear, Gandhiji spoke of fearlessness. Instead of revenge, he offered forgiveness. Okay? तो ये उनकी पर्सनालिटी थी. ये उन्होंने मैसेज दिया है पीस के रिगार्डिंग. ओके, गांधी जी ने 11 vows क्रिएट किए थे फॉर पीपल हु वांटेड टू लिव लाइफ ऑफ पीस. जैसे 11 vows क्या होंगे? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, सिंप्लिसिटी, स्वदेशी, डिग्निटी ऑफ वर्क, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी. ऐसे 11 थे. एंड दीज वन जस्ट मॉरल रूल्स. गांधी जी बिलीव they could transform ordinary people into extraordinary leaders of peace. Okay? तो गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और डीप बात भी कही थी कि इफ मैन गेन्स स्पिरिचुअली, if man gains spiritually, the whole world gains with him. If one man falls, the whole world falls with him. Okay, ये इन्होंने कहा था. Think about it ना. If you become kinder, more honest, more peaceful, the world around you will also become a little better. Because students, peace is contagious. ओके, और स्टूडेंट्स के लिए गांधी जी ने तो बहुत अच्छा एक टैलिस्मैन है, वो छोड़कर गए हैं. आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा. आप अपने बहुत सारे एनसीईआरटी बुक्स में भी लिखा है गांधी जी's talisman. He actually left behind this talisman for young people. He said that whenever you are in a doubt or when the self becomes too much with you, you just need to recall the face of the poorest and the weakest person you have seen. And you ask yourself,
if your decision will help him or her. If it does, then your path is right. Isn't that beautiful, students? Instead of thinking only about yourself, you think about the most vulnerable. Now, that is true humanity. Okay? तो ये तो था गांधी जी का मैसेज। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि आज है अगस्त 19 and every year August 19 celebrated as World Humanitarian Day to celebrate and recognize humanitarian workers. ठीक है? तो इसी लाइन पे एक और न्यूज आर्टिकल है वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग। अब ईयर था 1914, यूरोप, December 1914. First World War had just begun. Okay, First World War had just begun few months back, and enemy nations, they were fighting bitterly against each other in the wet, cold winter. Soldiers were, they were trapped in freezing trenches. They were killing each other day and night. Can you imagine the situation? But then, something happened. Something incredible happened. Something that shocked the entire world. On Christmas Eve, soldiers from both sides, British and the Germans, they came out of their bunkers. Okay? They came out of अपने bunker से बाहर आ गए वो. They came out without guns. They were carrying chocolates, but puddings, gifts, and they started singing Christmas carols. At first, students, there was fear. But slowly, both sides met in the no man's land. No man's land क्या होता है? Basically, the empty, deadly, empty ground between their trenches. So instead of fighting, what they did? They shook hands. Yes, उन्होंने हाथ मिलाया, अपना खाना शेयर किया, गिफ्ट शेयर किए, गिफ्ट एक्सचेंज किए. Some even played football together. Imagine that, students. Men who had been killing each other hours before suddenly becoming friends for one magical night. This came to be known as the Christmas truce. Okay? अब देखो, इसका एक एंगल ये भी कह सकते हैं कि जो कॉमन सोल्जर्स थे, कॉमन लोग थे, वो डिफरेंट नहीं है, वो ज्यादातर डिफरेंट नहीं थे दोनों कंट्री के. इट वाज ऑलवेज लीडर्स, जहां से ये स्टार्ट हुआ था. जो मर रहे थे, एक्चुअल में देखा जाए वो भी सोल्जर्स ही थे, वो भी कॉमन लोग ही मर रहे थे. जहां से शुरुआत हुई थी लड़ाई की, जहां से जिसने शुरुआत की थी, जनरली उनका इतना कुछ हार्म नहीं हुआ. ओके, लेकिन सबसे ज्यादा मारे कौन गए? सोल्जर्स. और वो तो आपस में देखो क्रिसमस ईव में, राइट? So why was it special? Historians still ask, why did the soldiers stop? Was it the spirit of Christmas? Was it a reminder of shared humanity? Well, we may never know. हमें नहीं पता चलेगा. But what we do know is that peace is possible. Peace possible है अगर हम इसको allow करते हैं. लेकिन बच्चों देखो हुआ क्या उसके बाद. Sadly, military leaders were angry. They feared that soldiers would lose their will to fight. They would lose their will to fight if they became friends. तो इसीलिए देखो फर्स्ट ईयर ही हुआ, उसके बाद स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास हो गए, वॉर रिज्यूम हो गया, और 4 साल तक ये ब्लडशेड चलता रहा. इट किल्ड
16 million people. Okay. So Christmas truce was short, but it remains one of the most powerful reminders of the human desire for peace. Soldiers peace चाह रहे थे, लेकिन वही है ना, आप समझ सकते हो। तो लेसन क्या है हमारे लिए? लेसन फॉर अस टुडे is that peace, students, peace begins with individuals. Gandhi ji taught us that one person's courage, one person's honesty, compassion, it can inspire the world. और देखो क्रिसमस ट्रूथ से हम क्या देख सकते हैं कि even in the darkest times, humanity survives. So Christmas truce showed that even in the middle of war, people long for love, people long for friendship. Okay? तो स्टूडेंट्स, हम कैसे पीस प्रैक्टिस कर सकते हैं? नेक्स्ट टाइम यू आर एंग्री, you think about it. Will you pick a fight or will you try to understand the other person? कभी नेक्स्ट टाइम आप किसी वीक पर्सन को देखो, पुअर को देखो, क्या आप गांधी जी के टेलिस्मन को याद करोगे? क्योंकि जो पीस है ना स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट्स विद स्मॉल एक्शंस. All right? Okay. So students, that will be all for today. I hope you learned something new. Okay then. We'll meet you in the next episode. Bye bye.